वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखेंगे इटालियन ओपनिंग के कुछ ट्रैप्स। एमेच्योर लेवल पे इटालियन ओपनिंग सबसे ज्यादा खेला जाता है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, knight c3, knight f6। एमेच्योर लेवल पे ये पोजीशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पोजीशन में चेस के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, दैट इज गेट होल्ड ऑफ द सेंटर एंड डेवलप योर माइनर पीसेस। और आप देख सकते हैं दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है व्हाइट और ब्लैक के लिए। तो नाउ व्हाइट प्लेस d3 aiming to develop the bishop and black also plays d6, bishop g5 pinning the knight to the queen। और इस पिन को हटाने के लिए ब्लैक प्लेस h6। आप इस पोजीशन पे सिंपली नाइट को कैप्चर कर सकते हैं, क्वीन टेक्स बिशप एंड knight d5 attacking the queen and also attacking the c7 pawn। ब्लैक का नेक्स्ट मूव काइंड ऑफ फोर्स मूव रहता है, जो कि है क्वीन रिट्रीटिंग टू द d8 स्क्वायर, इस फॉक को बचाने के लिए। एंड नाउ यू कैन प्ले c3 इन ऑर्डर टू गो फॉर द सेंटर। इस पोजीशन पे लगता है कि व्हाइट इज सिंपली प्लेइंग अ पोजिशनल चेस, एमिंग टू कैप्चर द सेंटर एंड देन कैसल एंड गो फॉर अ सिंपल मैच, बट देयर इज अ वेरी नेस्टी ट्रैप इन दिस पोजीशन। ब्लैक का इस पोजीशन पे एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मूव रहता है, जो कि है बिशप टू d6। बिशप टू d6 देख के बहुत ही ज्यादा नेचुरल मूव लगता है और एक डेवलपिंग मूव लगता है, पर ये एक ब्लंडर है, क्योंकि व्हाइट का नेक्स्ट मूव होगा d4, पॉन टेक्स d4, पॉन टेक्स d4। आप अगर बिशप को बचाने के लिए b5 में जाएंगे, देन सिंपली नाइट टेक्स बिशप, पॉन टेक्स नाइट, d5। आप बोथ बिशप और नाइट को फॉक कर रहे हो एंड दिस इज अ क्लियर एडवांटेज फॉर व्हाइट, बिकॉज व्हाइट अभी एक पीस अप हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, अगर इस मूव के बाद ब्लैक बिशप से चेक देने का कोशिश करता है, then we can take the bishop with our knight, and if knight takes, then there is a nasty queen a4 check। अगर ये knight retreat करता है, then फिर से d5 simply fogs the bishop and the knight। In case black plays bishop cross knight, we can simply take the bishop with our e pawn, and again both knight and bishop are under the attack by our pawns। So now coming to the last line, जो कि black के लिए सबसे ज्यादा favorable है, वो है bishop b4 check, and if knight takes, we can capture the bishop। Knight takes knight, pawn takes knight, and now queen c2, targeting the bishop and the pawn। Black का correct move रहता है इस position पे simply retreating the bishop back, but if black tries to protect the pawn with bishop b5, a4 attacking the bishop has only one square to retreat, and now queen cross c6 check and this bishop is hanging। ये रहा इटालियन गेम का पहला ट्रैप। लेट्स सी द अदर ट्रैप्स टू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा कूल लाइन ब्लैक के लिए। स्टार्ट्स विद e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, castle, knight f6, d3, e6, bishop g5। और आप अभी नोटिस कर सकते हैं कि ये knight c3 पे नहीं है, इंस्टेड ब्लैक प्लेड द मूव कैसल। ये knight अगर c3 में होता, then it could jump to the d5 square। So now black can play h6। Bishop taking the knight doesn't make any sense, just giving up a bishop for a knight। Now white plays bishop h4 and g5, attacking the bishop once again। Bishop g3, now we can play h5, aiming to trap the bishop using h4। White काउंटर अटैक करने के लिए knight cross g5 कर सकता है और f7 का पॉन को टारगेट करके क्वीन और रुक को फॉर्क कर सकते हैं। Now we play h4, knight takes on f7, forking the queen and the rook। और ब्लैक का नेक्स्ट मूव है pawn takes bishop, sacrificing the queen। Knight takes the queen, and now black can play yet another great move, bishop to g4, attacking the queen and also bringing up yet another piece to attack the king side। Queen goes d2, and now we can bring yet another material to attack the king। The most natural move for white is knight to c3, defending the e2 square, but इस पोजीशन पे ब्लैक कैन प्ले एन अनबिलीवेबल मूव, knight to f3 check। White captures the knight, bishop takes on f3, और अब pawn takes h2 in the next move is a mate। Now coming back to this position, h6, bishop h4,
g5, bishop g3. After h5, again aiming to trap the bishop, if white plays h3 to ensure an escaping square for the bishop, g4, takes, and now our rook is in an open file. In this position, white tries to create some counterplay using knight g5, again attacking the f7 pawn, but simply हम लोग knight को h5 खेल सकते हैं. White takes on the pawn, forking the queen and the rook yet again, and for the second time, हम लोग अपना queen को sacrifice कर सकते हैं. Knight takes queen, rook h1 is simply a checkmate. A brutal checkmate in the context of the game, sacrificing a queen. What could have been better? Starting with the final trap of our video. e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, c3, aiming to target the center using the d pawn. Knight f6, d4, pawn takes, bishop b4 check, knight c3, and now you can notice this pawn cannot be defended by your knight. So black takes on the pawn, and now white can castle. White simply develops his pieces and castles as early as possible in order to bring his pieces into action. Now bishop takes on the knight. We play d5, and you can see the knight and the bishop both are hanging. Black saves the bishop by going to the f6 square, and now we can attack another knight as it is pinned to the king. Black plays knight to e7, and now we can simply capture the knight. In this position, the most logical move for black is to castle. So after castling, there are visibly no threats in this position. But white now can play d6, fully blocking black's position. Pawn takes, queen takes, and now you can see black's pieces are underdeveloped and white's pieces are all active. Black plays knight to f5, attacking the queen. We can play queen to d5 and straight away attack the knight. The most common move for black in this position would be d6 to support the knight with the bishop. In this position, white can sacrifice yet another piece. Knight to g5, threatening the f7 square. Bishop take knight, bishop takes bishop, queen takes bishop. In this position, there is a checkmate in 2. I would love to ask my subscribers and my viewers if they could find the mate in 2. And if you do spot the mate in 2, please drop your answers in the comment section below. All the best and see you in the next video.